तो चेक करो लैम्बोर्गिनी, सो नाइस। अगर आप दुबई आ रहे हो तो एक कंपनी है वी लग्जरी कार रेंटल। यहाँ आके आप लग्जरी गाड़ी ले सकते हो रेंट पे और एंजॉय कर सकते हो। तो आई शो यू द लैम्बोर्गिनी हियर, दिस इज फॉर रेंट। This is the place where you can buy a car from rent. You can buy any sports car there like Lamborghini, Ferrari and Mercedes, Audi. All the sports car you can buy from here. So this is the property called V Luxury Cars. Yeah, V Luxury Cars in Marina area. Yeah, in Marina area near JBR. So you can buy the cars from here and enjoy. So check karo Lamborghini. So this is the B property in the Marina area where you can buy luxury cars like Ferrari, Lamborghini, Audis,
the car, whatever you like, you can buy from here. मैरीना एरिया की थोड़ी बात ही अलग है यार। मेरे ना हेयर्स पे मत जाओ, मैं अभी नहा के आया हूँ बीच पे था ना आज, तो बाल ख़राब हो चुके हैं क्योंकि पानी बहुत सोल्टी था। तो पीछे आप व्यू चेक करो। तो वही अपनी लग्जरी लाइफ के लिए वैसे नहीं जाना जाता, ये जाना जाता है इसकी इन चीज़ों के लिए, लग्जरी बिल्डिंग्स, लग्जरी फूड। Look at the Marina view. This is the JBR. Look at nightlife of Marina. Behind us. Però bello. Questo quartiere qua che è finito è bello. Which is perfect. दुबई के रोड देखो क्या शानदार है, और गाड़ियाँ चेक करो क्या स्पीड से जा रही हैं। कम से कम 100 से ऊपर स्पीड है गाड़ियों की, क्योंकि सारा डिपेंड करता है इंफ्रास्ट्रक्चर पे। दुबई का इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड में एक नंबर है, चाहे आप बिल्डिंग्स की बात करो, चाहे रोड्स की बात करो, चाहे दुबई की लग्जरी लाइफ की बात करो, एवरीथिंग इज फाइन एंड परफेक्ट। Look at that. So nice. पीछे ना मेरे ये शॉप है, डे टू डे शॉप। लाइट में पता नहीं आपको दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा। यहाँ पे आपको चीप में फास्ट फूड मिल जाएगा, लाइक 1 दिरहम में आपको समोसा मिल जाएगा, 2 दिरहम में ब्रेड, 3 दिरहम में कोक या कोई भी ड्रिंक ले सकते हो कैन वाली, और साथ में ही आप 8 दिरहम में आपको बर्गर मिल जाएगा। यहाँ पे अगर मेरा कोई भाई बहन यहाँ से खाना खाना चाहता है फास्ट फूड ओनली, जैसे ब्रेड पकौड़ा, ये सब चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएगी।
जैसे शर्प डीसी मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलोगे ना, तो राइट हैंड साइड पे शॉप है, स्टेशन से बाहर निकल जाएगी।